But anybody who understands f-stops already and would like to go ahead and shoot, because it's a beautiful venue as well, you can go down and shoot. And people who want to understand f-stops can certainly, we have two great teachers here, Sachin and Gaurav. They'll make us understand what f-stop is all about, and just like one of you, I'll also try and understand. f-stop the boring f-TV के बारे में बता रहा हूँ ज़्यादा अच्छा बता पाता मैं मेरा फादर मेरा बेटा 1.5 साल का हम तीनों बैठ के देख रहे होते हैं वो हम ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं So but we have seniors here, Mr. Nati Singh. We like कि Nati sir आप इधर आए तो Nati sir के बारे में सबको बताओ इनके लिए हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा पहले Have you seen the pictures? I think in the aerial shots. So he is a flying photographer. No, he's a commander with the Indian Navy. He's a commander with the Indian Navy and keeps traveling a lot. But of course, he's also the official photographer for the Navy right now. And, sir. A couple of my personal requests are pending with him. I want to go on that vessel wherein you have this fighter aircraft taking off. I get his shots lunga. So, but he travels a lot. But I love his photography. But I love his the way he sees things, and yeah, so very nice. So who will understand f-stops? Members must have read something. सर ने कुछ बताया था बल्ब होता है एक बल्ब जल रहा है और दूसरा बल्ब जल रहा है बल्ब कहाँ है यहाँ तो Please come sir, come share. Come share. Yes, please sir. With all of आप सब लोगों के सामने louder showing candle to the sun. But f-stop is something which increases or decreases your depth of field. Something which is a focal length, and if you want to make something clear in the distance, you increase the f-stop so that it just comes into it. The rest of it is a physics thing, so I'm not good in science. So theoretically, that's what f-stop is. Very nice. Please add. That's correct. Everybody come forward and just add things. Please add. Let's hear it more. Also, probably it also changes your shutter speed and other stuff, because it's one of the main component of photography, exposure, shutter speed, f-stop, which is also called aperture. Yeah. Right. Anybody else? F? Why is it called f-stop? F word is a very nice word. So all the words beginning with F are very nice. Many times nomenclature has no sense. There is no Pahad in Paharganj. There is hardly any Bavli standing in the the Khari Bavli. Just like that. Sometimes nouns have no sense. But there is nothing in gulab jamun. But F came from focal. Focal. But focal length. So sorry. No, yes, There is a of course. relation between the focal length And the f-stop. diameter of your lens. So probably we'll discuss that. F certainly came from there. Please add that. Please, others also. Anybody else? Please wants to add something to what your understanding is for an f-stop. Our DPEG logo. A DPEG logo. Kya? A DPEG logo is saying is showing a lot of f-stops. DPEG not having different f-stops. It's not f-stops, but I agree with you. Chalo. I get your point. They have all of those f-stops. Okay, anybody else? Okay, I'll just tell you. Yes, Yeah, please. There you go. See, I'm not very good in theory, but I know how to click snaps. When I started off photographing, I started with started clicking auto mode, and I thought that is fantastic. And slowly I came to program mode, and I realized that as I changed the buttons on my camera, I would get different types of photographs. So I got into theory of what exactly is f-stop. And whatever little I understood is, whenever I click photographs, I visualize in my mind that, if a f-stop is 2.8, my subject is going to be in focus and rest all is going to be blurred. So between 2.8 and 22, I try to visualize when I click snaps that, say I put it at 7.1, I'll get, sharper image behind, slightly sharper, and my shutter speed has to be varied accordingly. When I click a portrait, I would prefer to click a portrait at 2.8 or maybe, but certainly not more than 5.6, because I would like the subject to be in focus. Now, depth of field, absolutely, it varies with your aperture, whatever you're setting it.
Now my idea is that 2.8 the camera is going to open, the aperture is going to be open for quite some time. It's going to be a bigger aperture, and as you go to 22 it becomes smaller. And for a bigger aperture you need lesser light coming in, because the variable components effectively are three in camera: ISO, your aperture and shutter speed. So I've been playing between these and trying to get a good image. So this is what my understanding of a good f-stop is. And Like at, it's more of a mental calculation than yeah, but at 2.8. Is the sun bothering anybody? Then you can sit there. So what I wanted to suggest was, let us all go You have and to sit take a there. very fast shutter speed then. But anybody who doesn't want to stop, discuss f-stops, please. More than free. It's a beautiful monument. Go down, go up, down, left, right. Please shoot. And let's discuss also the f-stops, because very frankly I want to learn. There are pretty ladies also. You can take good photos. No, new bill came. You can't click for it. All of us who want to discuss and chat more. Come guys. So no more vitamin D, huh? Inconvenient हो रहा है. You guys don't want vitamin D. I want vitamin D, but I'm not very good in theory. Whatever understanding I have, I may be wrong. You may like to correct me if I'm wrong, but end of the day, I end up with some okay type of snaps. आ जाती है. But it is, I like to play with the. Especially when I'm clicking someone, I would like to play with between 2.8 and 5.6. I don't like to play beyond that. And what I've realized over a period of time is, underexposed is always better than overexposed. So you were just asking, 2.8 doesn't require a tripod at all. That is my understanding of a f-stop. No, it depends. No, it's landscapes are absolutely a different. Tripods are primarily for light. I mean, No light. Natty just say, sorry to say, but when you say 2.8, you don't need tripods. If it's a night shot. A night shot, no, I'm talking about the day shot. The day. So it all depends on the light. It all depends on the shutter that you've got. And the ISO. But all senior photographers have taught me that you should always carry a tripod. You should always use it as much as you can. Tripod, yes. Because even when I'm clicking the button, there could be a shake in the camera. So that's how it is. So I do carry my tripod wherever possible. जो गाड़ी में रखा रहता है, but it's there around. And we should use it. All right, sir. You want to talk something about f-stops? Anybody else, sir? Please, about f-stops. I have a question. Sure, sir. Please. Question is that whenever I try to take photograph in indoor, for example, in photograph of the group, of course I can't keep the aperture at 2.8 because I have to take the entire group in focus. Okay. That time I reduce it to 5 or 5.6, something like 5.6, something like that. Then the picture becomes darker. I just don't know what to do at that moment. In a group, indoor. So let's hold this question for a minute. F-stop, as Paji has said, f-stop is basically a unit to measure light. Okay? So it is related to aperture. And so when we talk about aperture, there are two functions of an aperture. Primarily, the first one is to maintain the exposure in your photograph, and the secondary one is to control the depth of field. So we'll first talk about the primary function, which is you are maintaining the exposure. So aperture is basically the opening through which the light comes into the camera and goes onto the sensor and the image is formed. Okay. So how big that aperture should be, what we call as iris. Iris you have in the eyes also, right? So what we call is the iris. How big that iris should be is basically the f-stop of your aperture. And how small that iris should be is basically again another value of aperture, f-stop. So the relation is inverse. If it is f2, that means your aperture is fully open. You have a big iris. More light will come in and your picture will be bright. If it is small, let's say f22, so the number is going high here, so you'll have a small iris. Less light will come in, so that is how your picture will be underexposed. Now probably you'll have to tweak with the shutter speed to have a proper exposure in that case. Again, shutter has two functions. One is to maintain the exposure, primary. The second one is to control the motion or the blur, okay, or to freeze a subject. Now, coming back to the secondary function of aperture, which is depth of field. Now, what is depth of field? Depth of field is how big your area which you're trying to focus,
that is depth of field. How big is that zone? So let's say if I want, the focus should start from here and should go up till that end of this monument. So that is a bigger zone. Okay, it's a big zone. So how much bigger is that area which I want in the focus is actually maintained by your aperture. Now someone is talking about shooting at f2.8, someone is talking about shooting at f8, someone going to extremes of f22. So why? It depends on the situation. So let's say you're taking a portrait and you want a particular person to be out of focus in that portrait, probably who's at the background, or probably you want background to be blurred. Then you shoot the bigger aperture, which is 2.8. Okay. So only the person that you're focusing will be sharp, and rest everything will be blurred. Now let's say you're shooting interiors, or probably this monument here. You want focus right from this point till that end point. You want a bigger depth of field zone. Then you probably will keep your aperture at f8 or f11. Okay, going to extremes I would not suggest, because if you go at 2.8, if you go at 22, those are the extremes of a lens. So you might lose on quality or the clarity. Okay, I'll come on that. Group photo में usually 5.6, 7.18 चलता है. There are many lenses. सबके f points अलग-अलग होते हैं, सबके apertures अलग होते हैं. 2.8 से start होता है, 2.5. So how to calculate the sweet spot? I mean, How to calculate? Sweet spot. the feature where I have heard Beauty spot. three stops higher than the maximum. But how to calculate that? Will come on the sweet spot also. Sorry. Now, if you talk about lens manufacturers, they have a MTF chart. Okay. So what happens in that MTF chart is they tend to keep the sharpest clarity or the clarity at f8 or f11. In most of the lenses, you will find it at f8. So their benchmark is at f8. Okay. If you keep your lens at f8, you'll get everything sharp. For liquid and Canon, Any manufacturer, Sigma, Tamron. It's between 8 to 11. It's not 8, it's not 11, but normally they say you must find out your own lens. Sorry? For all the lenses, the benchmark is f8. Now, we discussed about when to use f2.8, we discussed about when to use f8. Now, let's say someone was talking about shooting group picture at f2.8, right? Yeah, Yeah. So, your depth of field also depends on the focal length and the distance. So, let's say your group is standing there at the railing. If you keep 2.8, you'll get everyone clear. Indoor, that cannot be that. Okay. So I'm just taking an example. If everybody is standing at that railing, you keep f2.8, everything will be clear. Now Natty was talking about shooting a subject from a height. If you keep at 2.8, you'll get everything clear because he is at a distance from the subject. Now if you get closer to the subject, the background is a little far away. f2.8 is not the right aperture if you want background also to be in the focus, because it also depends on the distance. Okay. You are getting closer to the subject, your focus area is the subject, but the background is way far. That will go out of focus. Then you probably will have to increase the f number going to f8 or f11, then you'll take it. But then if you are at a distance from the subject, f2.8 is fine. You can click it. Can I just make it more interesting while we all talk? Can somebody give me, say, what are f-stop's numbers? Let's start off with that. 1.8, 1.4, 1.2, 1.8. एक मिनट अभी बताते हैं आपको, आप गलत बोल रहे हो वैसे, असल इज रॉन्ग. 1.2 से I think sir, 1.1 लेंस भी आता है कैनन में 0.95 का. कैनन तो कुछ भी बना सकता है. You're right. That's why Canon goes. That's what it is. Canon has Okay, is 0.95. Chalo, leave it. Is gathering more light than what is available. Yes. डालना DP check करना Google. There is a lens of 0.95. is aperture value 3, for example, or 3.5? Is that a full f-stop? What? Sorry. An aperture value of 3.5. I'm giving a question. Just is that a full f-stop? it depends on the lens. Why do you say no? Because that has to be 1 from your
Yeah, you're right. You're right. That's right. Yeah. Anybody else? Is F9 a full f-stop again? I mean, just a question. I said 3. Let me ask you 9. Is F9 also full stop? Do we know the progression? What is an f-stop? What number it starts from? Where does it go? This is what I wanted to understand, because see, apertures we all have. F22 we also know how to shoot. F9 also we know how to shoot. And I think he's already answered the question very well of a lot of people around. What is it? 2.8? What's the depth of field? How we do it? But I'm stuck up at f-stop. What is an f-stop? What is that number and how does it multiply? Sometimes multiply, you can configure it in. That's right. So what is one stop? You're right. You're putting photos up. What is the one full stop? One full stop depends on the length, or probably it depends on the starting point of the length. Is it something like that कि जो numbers होते हैं अगर उस पे हम shoot कर रहे हैं तो those are the stops? You all have to discuss and understand it. So what you're talking is stop. If it starts from 1.8, 2.4 probably would be the one full stop. 1.8 is again not a full stop. Correct. 1.4 is 1.4 and then 1.8. 1.4, 1.4, 2.8, 2.8, 4, 5.6, 4, 5.6, 11, 8, 11, 16, 22, 32. These are the f-stops. Anything in between can be half a stop, can be 1/3 of a stop. Would you like to explain, sir, how a full stop, how and a multiple is happening? We'll come to that. Will you let me So explain? beforehand we started, we are not at all teachers. We are only people who have read our manuals and we just love to share. हमारे घर के लोग हमारी बातें सुनते तो बाहर जाके लोगों को सुनाते रहते ठीक है ना? और since we are the admins, so we hold the podium anyway. किसकी मजा है नहीं तो कल सुबह से अभी बटन दबाना और काम है साथ. So what is f-stop? For every measurement there has to be some unit. अगर इंच है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोज है, so फोटोग्राफी में there has to be some measurement unit. तो जब कैमरास बनाने शुरू हुए थे तो एफ स्टॉप का एक फीचर आया जिसको कुछ लोगों ने मिलके एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी आज से 70-80 साल पहले इतनी ही थी. अपर्चर का जो ओपनिंग है उसको जब वेरी करो, बढ़ाओ या घटाओ, तो लाइट या तो डबल हो जाएगी या हाफ हो जाएगी. लेट्स टेक इट इजी वे. So one stop is either we are increasing light by double the unit or we are halving it. So that's the f-stop. That is the f-stop. That's the main purpose of the f-stop. So अब You're doubling the light or you're reducing it by half? Sorry, go ahead. One stop. We'll start only by discussing one stop. So what one stop means, either we are increasing the light by double or we are decreasing the light by double. Either using the ISO or the aperture or the shutter. Or using the ND filter or by whatever means, by using our socks. It is only a, yes, it was done earlier. People ND filter जो है लोग stockings use कर लेते थे पहले. So it's only a unit of measurement to measure light. कि हमें कितना exposure चाहिए, what we term कि भाई कितना unit, एक stop, दो stop, तीन stop, so we need some units to explain the quantum of light. So F numbers, how do we derive F numbers? Okay, how do we derive F number? We were talking about one stop. Okay, so let's take one. F1 is a base unit, and then F1.4 is the next stop, 2 is the next stop, and then 2.8 is another stop. So how do we calculate it? Let's assume a lens is of 50 mm, okay, which is 50 mm is the focal length. That's how F came into the picture, they were saying. So 50 mm के साथ में अगर आप divide करोगे उसका diameter, that actually gives you the F number. So let's take an example. If it 50 mm is the focal length, आपके पास किसी के पास निफ्टी 50 होगा, कोई है किसी के पास? So 50 divided by number of that becomes the focal length. 50 divided by the focal length. The focal length of this lens is 50 mm. Okay. And then now there is the diameter, right? The diameter probably would be any mm. Diameter भी कभी कुछ mm होगा. तो अगर आप इसको 25 mm पे set कर दोगे diameter को, and then the focal length was 50 mm. 50 mm को diameter से divide कर दो कितना आता है? 25 mm से divide करोगे 2 आएगा. So that is f2. That is f stop. वो unit हो गया उसका. ये अब f2 पे set हो गया है. अगर आप इसी को आगे ले जाके आप 12.5 पे आप कर दोगे तो 50 divided by 12.5 diameter वो उसका f stop हो जाएगा. 4.
So now there are various lenses. अब 100 mm लेंस भी है, 200 भी है, 50 भी है. मैं बोलता हूँ मैंने f4 पे शूट किया, मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड मिल रही है. आपका 100 पे शूट किया, बट देयर हैज टू बी समथिंग ना जो सबको रिलेट करेगी. आपका f4 मेरा f4 सेम ही होना चाहिए. Irrespective फोकल लेंथ कितना ओवर राइट करें. So there is this formula of dividing the focal length by the opening of the aperture. तो एक्चुअल अपर्चर अंदर खुलता है फ्रंट एलिमेंट से, जो दिखता है हमें डायमीटर दिखता है ना खुलता हुआ, उसका कितना मिलीमीटर है. सो बड़े लेंसेज का अपर्चर ज़्यादा बड़ा खुलता है, छोटे का थोड़ा कम खुलता है. हेंस फोर्थ बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमारा अपर्चर सबका इक्वल रहता है. वी आर नॉट यूजिंग डिफरेंट अपर्चर्स. दिस इज ओनली अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन. वी कैन रीड इट लेटर ऑन, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. नाउ वी कम टू एफ नंबर्स के. ये जो नंबर्स बढ़ते हैं घटते हैं, क्यों बढ़ते हैं घटते हैं. नाउ देयर इज 1 यूनिट ऑफ लाइट, लेट्स से 1 यूनिट, एंड वी ओपन द अपर्चर बाय f1. हमारे पास 1.8 है या 2.8 है या 5.6 है या 4.3 है. Which means if your lens is 2.8, let us say there is 2.8 units of light, only 1 unit is coming inside. Now if we had a aperture of f1, that would mean that there is 1 unit of light, a whole unit is coming inside, 1:1. So 1:1 को बेस ले लो, f1. Starting from them, या तो हम रेटिफाई कर सकते हैं या हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये सिंपल मल्टीप्लाई करके ये जो सर ने बोला प्रोग्रेशन हम याद कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अपर्चर f1. So next is 1.4. But why 1.4? Right, so why will come later. Let's simply say f1 को be multiply by 1.4. Then 1.4 That's the formula I have ratified. Either you go by multiplication. 1 multiplied by 1.4. 1.414 is the exact number, but you should do by default if you do 1.4. 1 into 1.4, the next becomes 1.4. आज हम यहाँ से सब जाएंगे ना. We should all be remembering the whole series of aperture at least in one stop वाला. हाफ स्टॉप उसके बाद अपने कैमराज में 1/3 स्टॉप उसके कैमराज में देख के मन करे तो याद कर लेना. But at least we should all leave this place one full stop when we all understand the series. So 1.4 into again 1.4 will get you 2. 2 into 1.4 will get you 2.8. 2.8 into 1.4 will get you 4. 4 into 1.4 will get you 5.6. Now this is the way of. So that's how you get the multiplication. Now that's the full stop, which means now from 1.4 to 2, either we are doubling the light, or from 2 to 1.4 we are halving the light. So at a lens of 200 mm, focal length for example, I can divide it by 50 mm. My aperture is 4. Right? I can also do it by 100 mm at 25 mm. 100 mm focal length, 25 mm the aperture diameter. So that gives us that even at his lens or my lens, if I'm using a 50 mm lens, he uses a 200 mm lens. But when f4, the light which is coming inside, now this series, this is a multiplication we all know, but then it's difficult to remember by multiplication. Let us use the cheat code. Big brown fox jumped over the fence. ठीक है? So 1 and 1.4 सिर्फ ये दो याद रख लो. We can remember that. उसके 1.4 के बाद 1 का डबल करो. 2 आ गया. वापस आओ. 1.4 का डबल करो. 2 का डबल करो 4. 2.8 का 5.6. 4 का 8. 5.6 का 7.2. 5.6 का 11. 5.6 का we are not going in integers because for easy करने के लिए उसको ऐसा बनाया गया. 5.6 का 11 हो गया. 11, but we just for simplifying it. अब 8 का राउंड ऑफ कर दिया. 16. आप मल्टीप्लाई का याद रखो that 1 से 1.4, remember 2 and then simply start up. Now remember this series, we should all remember this 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 22, 32, 64, 128. ऐसे याद होना चाहिए जैसे 2 एकम 2 होता है. Because we all are serious photographers, तो हमें एटलीस्ट अपनी अपर्चर सीरीज याद होनी चाहिए. That's the point about it. Because if we go to studios वगैरह, ये बड़ा frequently use होता है calculation of light में. And of course we all will graduate to that level someday or the other. So at least we should remember in one stop the whole aperture series. So 1, 1.4 and the cheat code is 1 का double 2, 1.4 का double 2.8, 2 का double 4, 2.8 का 5.6. Now I am good with tongue twisters. ठीक है ना? I can say like this: 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 चौके 8, 2 5 10. So I am good with tongue twisters. अच्छा, now the question should arise: why 1.4? Why? 1 के बाद 1.4 क्यों? There has to be some physics or some mathematics. अंग्रेजी बताओ. नहीं सर,
You continue. Perfectly. You continue. So there has to be a series. So you see the aperture, it is almost a complete circle, right? So what is the area of a circle? Pi r square. Pi r square. क्या बात है? Okay, see, if I say now the aperture is a circle, so if I have to increase, let us say the light coming from the circle, उसको मुझे double करना है, तो I have to calculate the area of a circle. You understanding this? So this is ultimately a circle. So if we want double the light, we have to increase the area by double. We don't have to increase the circumference or the radius. कुछ नहीं. हमें सीधा the area double चाहिए, right? So what is the factor of area of circle? Pi r square, which means 3.148. 22 by 7 multiplied by radius का square. All right. There's a little bit of mathematics calculation. आप सब करके देखना. So ultimately जो factor आएगा radius का वो 1.414 आएगा. Right. If I multiply, let us say my aperture is f4, and if I take its, मैं उसका area निकालना चाहूँ 22 by 7 into 4 square, यानी 16, तो ये आता है 25. करके देखना कैलकुलेटर. कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. नहीं आसान था ना, थ्योरी बता रहा हूँ लोगों इसके अलावा दूसरे फीचर्स में नहीं पूछना चाहिए और वी शुड अवॉइड इट. No, we'll come to practical usages later on. अभी छोड़ो, सिर्फ आप थ्योरी अंडरस्टैंड कर लो, just for the sake of understanding. So 22 divided by 7 multiplied by 16. 50.24. हाँ? 22 divided by 7 is equal to this multiplied by 16. This is getting 50. So area of this pi r square, if I take radius 4, it came to 50. Now I want the result to be 100. Square mm. Huh? Square mm. Square m square root. Square mm. Pi r square कर रहा हूँ ना. ये तो यूनिट वो हो जाएगा. चलो f4 था ये. अब मैं चाहता हूँ कि इसका सीधा 50 का आंसर 100 आए. तो पाई r स्क्वायर जो मैं करूँगा वो 4 की जगह 8 नहीं यूज करूँगा, 5.6 करूँगा. If you check the calculation mathematically, reverse करके या जैसे भी, you will come to know that 1.4 is the multiplication that we are doing. Henceforth, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाने के लिए जब लाइट हम डबल करते हैं तो we multiply में 1.4. इसीलिए हमारा जो है ये 1.4 में चल रहा है. मतलब if I say कि f2 पे मैं शूट कर रहा था और अब मैं f4 पे शूट कर रहा हूँ, तो लाइट का कितना डिफरेंस डाला? लेट अस से f2 पे 100 यूनिट्स लाइट थी, f4 पे कितने यूनिट लाइट हो गई? 50. हाफ. हाफ का हाफ. मैंने जानबूझ के इसके बीच में 2.8 नहीं बोला. वो 2.8 पे हाफ हो रही है. Now this is it. So no, it is very easy. Understanding photography is not at all difficult. It is simply confusing. I deliberately missed one stop. I told you 2 stops. तो आप हाफ का हाफ करोगे. Yes. So you'll come to 25. चारू तो बड़े 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 माथे पे. चारू कह रहा हूँ, सॉरी. ये ना हमारी फ्रेंड है चारू चौहान, ये भी उनकी तरह सुंदर है, इसलिए बोल गया मैं ऐसे. कहाँ से सिमिलर है? सुंदर है, सिमिलर नहीं है. क्या क्या मेरे बारे में? हाँ, सुंदर की बात हुई तो मैंने कहा आपको आगे बढ़ो. ठीक है. So it is little confusing but not difficult. We all understand this 1.4 to 2.8, but the point is little confusing, right? Because क्या होता है कि 2 और 4 में we are used to सीधा डबल तो हम फैक्टर को कर रहे हैं, but बीच का जो पंगा है ना वो 1.4 वाला, that is a little too confusing. यही सेम शटर में चलेगा. शटर में आप सीधे सीधे डबल करेंगे, उसमें बीच का पंगा नहीं रहता. 100, 200, 400, 8 ऐसे चलेगा, उसमें बीच का नहीं है, अपर्चर में ही है. एंड देन उसके बाद आप 1.5 हाफ स्टॉप करो, 1/3 स्टॉप करो. दैट यू कैन चेक इन योर कैमरास लेटर ऑन, बट राइट नाउ टुडे ओनली मेमोराइज दिस 1.4 to 2.8. बाकी चीज़ें आसान है. शटर सीधे 100 का 200, 200 का 400 हो जाएगा. ISO भी ऐसे ही चलेगी. अपर्चर ही कंफ्यूजिंग है, बिकॉज अपर्चर के अंदर अभी हमने देख ही लिया 2 और 4 के अंदर डबल नहीं हो रहा होता. 2 के बीच में 2.8 भी होता है. तो ओनली बिकॉज अपर्चर इज कंफ्यूजिंग, तो वी नीड टू फोकस ऑन अपर्चर फर्स्ट. दैट इज द प्रॉब्लम पॉइंट. शटर ISO तो बहुत आसान है, वो चीज़ डबल होता है, 100, 200 ऐसे होता है.
हाँ आप लोग ये देख लीजिए लेंस के अंदर ओपनिंग कैसे होता है। आपके पास अगर 50 mm हो तो ये देखना, इसके अंदर देखते रहना। डू यू सी इट इज ओपनिंग अप? ठीक है, बेसिकली इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ द ब्लेड्स। दिख रहा है? ठीक है, दिस इज एट f1.8 completely white. ठीक है, and this is at f22 or 32 whatever maximum here on this lens. ठीक है, ये हर लेंस में ऐसे ही होता है। अब इसके अंदर क्या है, 50 mm जो निकॉन का D लेंस है उसमें एक अपर्चर रिंग आप मैनुअल पीछे भी होता है। ठीक है, आप इसको मूव कर सकते हो, 1.8 पे लेके जा सकते हो, 2.8 पे लेके जा सकते हो। आप देखो ठीक है, जितना ज़्यादा वाइड होगा उतना ज़्यादा लाइट अंदर आएगा, उतना डेप्थ ऑफ फील्ड छोटा हो जाएगा। जितना नैरो होगा उतना, आपको पता है पिन होल कैमराज आते थे पहले, आर्मी में यूज़ करते थे पिन होल कैमराज। ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत पिन होल कैमरा। Just one question, that if I'm increasing by one stop, the shutter just It depends. the lights are not depend करेगा ना? शटर आपका जैसे 250 था, तो उसको हाफ करो या उसको 500 करो, 125 या 500। So let us calculate in exposures. अब एफ स्टॉप तो हमने सुन लिए सारे, लेट अस कम टू एक्सपोजर्स। अब शटर की जरा चेक करो, आप सब अपना कैमरास खोल लो, पहले अपर्चर प्रायोरिटी पे जाओ, चेक द वन स्टॉप की फुल स्टॉप आ रहा है, अगर 1/3 में है या हाफ स्टॉप में है। यू नो दैट यू कैन चेंज योर वेरिएशंस, हाफ स्टॉप और 1/3 स्टॉप्स आप कर सकते हो कैमराज में। वी ऑल कैन डू दैट, मोस्टली सबके 1/3 में होंगे, तो उसको जो मैक्सिमम मिल रहा है, या एवरीबडी कम टू F4 सबके पास होगा। फुल स्टॉप सबको याद हो गए ना? F4 पे ले आओ, यू जस्ट गो टू अपर्चर 1.4 to 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 22, 30। अब ये इस तरह से करो, पहले आप याद रखो, पहले यू ऑल कम टू अपर्चर प्रायोरिटी, देन सेट योर कैमरा टू F4 रख लो। ठीक है, अब एक एक आगे बढ़ाओ। F4 के बाद देखो क्या आया, 4.5, एक बार और बढ़ाओ, 5.6 पे आ जाओ, और आगे आओ, 5.6 पे शटर स्पीड नोट कर लो और वहाँ पे नोट कर लो। यू सी F4 और 5.6, दिस इज वन स्टॉप, बीच में हाफ और 1/3 स्टॉप भी है। अगर किसी का कैमरा खाली हाफ स्टॉप पे तो हाफ ही दिखाएगा, otherwise you can all keep it to 1/3 so that you can tweak a little more and tweak a little less. 1/3 we have more freedom है। डिफॉल्ट 1/3 पे रहेंगे मोस्ट ऑफ द कैमरा। आज सारे प्रैक्टिस 1 स्टॉप की ही करना। गौरव 1/3 बोले तो 1/3 बोले तो हाफ के बाद 1/3, जैसे 1 है, 1.4 है, फिर 2 है। एक स्टॉप को 3 पार्ट में कर दिया तो एक पार्ट। 4, 5, 5.6। एक ब्रैड पीटरसन की बुक आई अंडरस्टैंडिंग एक्सपोजर अच्छी है, बहुत अच्छी। टिप्स वंडरफुल, उसके 4 चैप्टर पढ़े तो उसके सारे अंडरस्टैंडिंग एक्सपोजर, चेक दैट, वेरी नाइस। जब आप एक स्टॉप चेंज करोगे तो शटर अपने आप चेंज होता दिखेगा। शटर में नोट रीडिंग करना है, 4 पे कितने आ रहे हैं रीड करो। अच्छा, बट ISO सब 100 रख लेना। अब देखना कितना आ रहा है, F4 पे शटर कितना आ रहा है। अच्छा, अपना वो अलग आएगा, हर किसी का अलग आएगा। अच्छा, हिलाना मत कैमरा को दोबारा, उसी पॉइंट पे रख के फिर उसको F5.6 कर लो, देखो कितना शटर आ रहा है। F4 पे आपका कितना आया, अब उसको 5.6 करके देख कितना आया। उसी फ्रेम को लेना। पहले कितना था? थोड़ा सा हिल गया होगा आपका। मीटरिंग क्या रखा है? डबल या हाफ और एक। अच्छा, कोई सर मैंडेटरी सर आप एक बार करके रीडिंग बताओ फिर सबको, कहीं नॉर्मल जगह की। टेक ऑन अपर्चर वैरायटी एंड गो ऑन F4 and 5.6। F4 कर लो, F4 अपर्चर प्रायोरिटी करके F4 कर लो, लेट्स सी व्हाट इज द शटर। F4 पे 100, 5.6, 60 आधी हो गई ना शटर, ठीक है ना। ये एक्सपोजर कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए क्योंकि हम सब ऑटोमेटिक कर रहे हैं, पर मैनुअल हमें पता होना चाहिए हम करके। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, आपने 2-4 बार बोला प्रॉब्ली ऐसे हो जाएगा या, बट ऐसा नहीं, देयर इज सिंपल मैथमेटिक्स, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी इन इट। अगर शटर को हम डबल करेंगे तो अपर्चर हाफ होगा ही होगा। इट इज सिंपली लाइक अ वेइंग स्केल, सिंपली लाइक अ वेइंग स्केल। अभी 250 ग्राम इधर डालोगे तो 250 ग्राम इधर आएगा ही आएगा, नहीं तो ऊपर नीचे जाएगा। टोटल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वही पढ़ा नहीं था मैंने साइड। आप सब करके देखो ना।
अपर्चर प्रायोरिटी पे जाओ, F4 करो एंड चेक योर शटर स्पीड। उसके बाद आप 5.6 कर दो। अब आप F4 से 5.6 करोगे तो आप क्या कर रहे हो? तो you should able to see that yes there is equal difference। बढ़िया ये होगा फिर ट्राइपॉड पे रख के आप चलो, क्योंकि ऐसे हाथ में चल जाता है तो हल्की सी एवरेजिंग में फर्क आ जाता है मीटिंग। एक सर्विस 16 वो भी। अच्छा, I ask a question. If the shutter aperture is f8 and shutter is 1000, I do the aperture 5.6, तो मेरा शटर कितना हो जाएगा? 16 मिनट नहीं कितना खुला दोबारा सुन लो। f8 aperture, shutter 1000, keeping ISO constant, everything constant, only two variables. शटर 1000, अपर्चर f8। मैं f8 को 5.6 करता हूँ तो मुझे शटर अब कितना करना है सेम एक्सपोजर के लिए? जोर से बोल। 1250 क्यों? उसमें जब लाइट कम हो जाएगी तो उसमें लाइट होगी। बाबा सर आज मैं कह रहे हैं बराबर करना एक्सपोजर। एक्सपोजर वही रहे, शटर स्पीड क्या रहेगा? Go back to your basics. Double and half only. 2000 is the right answer. Now think again. आज हम प्रैक्टिस करके जाएंगे ये सब चीजें। We will do some mental exercise. कभी समझ में ना आए तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आया F-stop क्या चीज़ है? गलत तो नहीं बोला था? देखो शटर के अंदर स्टॉप कैसे बढ़ता है? 100, 200, 400, 800, 1600 and then 3200। एक स्टॉप बढ़ता है। अपर्चर के अंदर कैसे होता है? 1, 1.4, 2, 2.8। तो शटर का तो बिल्कुल सीधा है। अगर आपने अपर्चर को एक स्टॉप कम कर दिया, 8 से 5.6 कर दिया, तो उसकी लाइट कंपनसेट करने के लिए शटर हमको चेंज करना पड़ेगा। 8 से 5.6 क्या मतलब? अपर्चर बड़ा हो गया, लाइट ज्यादा आई। अब लाइट ज्यादा आई तो शटर को हमको बढ़ाना है, उसको लाइट कम करने के लिए 1000 से एक स्टॉप ऊपर क्या होगा? अब ऐसे ही f8 का f4 होता तो शटर क्या हो जाता? It is not difficult, it is confusing। लिख लो ना, ठीक है? F8 का क्या हुआ? F4 होता जब F8 का 5.6 होता 2000 था। F8 से F4 कर दिया, मतलब दो स्टॉप नीचे ले आए, दो स्टॉप इसको भी तो ऊपर लेके जाओगे। अब शटर मेरा 1000 था F8 पे, अब वो उसको कंपनसेट करने के लिए कितना करना है? अगर f8 से 6.3 आया होता तो क्या होता शटर? 1000 थी शटर। 1600 के करीब कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैमरा में रख लेना बाद में। ऐसे 1500 हो जाएगी। 1300 समझ आ गया, मतलब पॉइंट समझ आ गया। समझ आ गया? ठीक है, थोड़ा और सिखा देना प्लीज आप। थोड़ा और करें? रियली? अरे वाह। चल अच्छा चलो, देन आई से ISO was 400 and ये बहुत गंदा है ये। बोलो 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 बोलो। ये ज्यादा हो रहा है। ये बड़ा ज्यादा हो रहा है। No confusion क्या? No confusion. ISO is 400. Now the shutter is 1000 constant. अपर्चर उस समय मान लो F4 आ रहा था। दोबारा बोलता हूँ। ISO is 400. Shutter is 1000. अपर्चर उस समय आ रहा था 4। मैंने कर दी ISO 200। अब अपर्चर क्या हो जाएगा? अपर्चर को भी कम करना पड़ेगा। अब बताओ ना, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? पहले 4 था ना, 2 करना पड़ेगा। तुक्के नहीं कैलकुलेट। वन स्टॉप नीचे। हमें ISO 400 से क्या करी? 200 करी। कम इफेक्टिव किया तो अपर लाइट कम हो गई। ठीक है, अपर्चर कितना था? 4 था तो 5.6 क्यों होगा? तो कम होएगा ना, एक स्टॉप नीचे कम होगा। कम नहीं, टॉक इन रेगुलर गुड टर्म्स। क्या कम ज्यादा नहीं? 2.8 होगा। या तो आप बोलो वी विल ओपन द अपर्चर, या बोलो वी विल रिड्यूस द एफ नंबर। अगर आप बोलो ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा तो आप मेरी बात समझो। सुनो, आई नो आपने किया है। यू आर नॉट डूइंग न्यू मिस्टेक्स। आई हैव डन दिस अर्लियर। एवरी फोटोग्राफर डज दिस। जो भी चलना सीखता है एक बार गिरता ही गिरता है। Brian Peterson, what he has said
व्हाट ही हैज सेड, अगर आप फॉसेट होता है जो टैप होता है, टैप का ओपनिंग जितना ज़्यादा खुला होगा उतना ज़्यादा पानी आएगा, ऐसा ब्रायन पीटरसन बोलता है। मतलब दैट्स अनदर वे ऑफ मेकिंग इट अंडरस्टैंड। अगर आप जितना ज़्यादा उसको टाइट करते हैं उतना ओपनिंग कम हो जाएगा, उतना कम पानी आएगा। But पानी is related to the light, okay, and your tap opening is related to your aperture. एक्चुअली पता क्या होता है, ब्रायन पीटरसन तो फनल भी बोलता है। कितने प्रेशर से आ रहा है वो सेंसिटिव ISO हो गया आपका? मुझे मैंने बता दूं, वो शम्स मेरे इधर से अच्छा मेरी बात सुनो, आप गुरु ग्रंथ साहब को रट लो, पढ़ते रहो, फायदा नहीं है। मन में बाबा जी रखो, दैट इज फाइन। तो मैं आपको मन में बाबा जी रखना बता रहा हूँ, दैट वुड हेल्प यू मच बेटर। प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग, ठीक है ना? मैनू नहीं आंदी गुरमुखी पढ़नी, पर तुम मन च बाबा जी रख सकते हो। ब्रायन पीटरसन रखो साइड च, यह चीज अंडरस्टैंड करो तुम, ठीक है ना? दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। सो अकबर को बुलाओ दिल्ली में। Now we want is that when we talk, all of us we discuss, of course, let us discuss in proper terms. So how we discuss then? जैसे of course this confusion was कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा. Now either we say we reduce the F number or we say we open the aperture, we close the aperture. There are two ways to talk. Right? There are two ways to talk. अतुल बाद में प्रूफ कर लियो। Either we say कुछ नहीं either we say F number बड़ा कर दो, F number छोटा कर दो। We reduce the F number, increase the F number, or we say open the aperture, close the aperture. This is the language. अगर हम बोलेंगे बढ़ जाएगा, घट जाएगा, हम कंफ्यूज नहीं। तो आप आज ट्राई करना, सारे देखना एक्सपोजर उसको, और एंड्रॉइड है तो उसमें भी सॉफ्टवेयर आते हैं जस्ट फॉर फन, अगर आप देखना चाहो। बट इट इज बेटर इफ यू जस्ट डू इट मेंटली, बिकॉज कंफ्यूजन तभी जाएगा जब मेंटली करो। आप प्रैक्टिस करोगे जितना आपको, आप जब तक आप कोऑर्डिनेट करते रहोगे तब तक आपको नहीं आएगा। जी आई एग्री। करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जाते सिर पर परत निशान। इनक्रिप्टेड जब तक आपकी मेमोरी में जाएगा तब तक नहीं समझ पूरा याद करके मैं बड़ा अच्छा हो रहा है, टॉप पे याद करा दे। ये मैं पहले यहाँ पर वोट फॉर गौरव अरोड़ा, नहीं तो मार पड़ेगी, टांगे टूटेंगी, घर से उठा ले जाओगे। So this is the thing. Now we are done for this. It will be confusing, but लिख के करो, you will all get to good terms, because when we go to studio, we will be talking everything in terms of aperture. Stutter नहीं होता स्टूडियो में, स्टूडियो लाइन में stutter is nothing. कोई चीज़ ही नहीं होती। दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग। मेन चीज एपर्चर होती है, बाकी दो चीजें उसको हेल्प के लिए होती है। आप स्टूडेंट एनवायरनमेंट में हो तो आप ISO 100 ही रखना चाहोगे, IS क्वालिटी 200, then there is no such thing in as shutter in the studio light, because then you are shooting at Mark 3, you shooting at the speed of light, so there is no aperture. आप 10 सेकंड एक्सपोजर ले लो, लेट्स से अंधेरा है, अंधेरे में आधे घंटे का एक्सपोजर हो या 1/10 का एक्सपोजर, इट इज सेम। शटर स्पीड को मायने नहीं रखती। There is no ambient light. There is no ambient light, then shutter speed would not matter. It would not matter. So hence for studio we use only f-stops. When you talk in terms, you talk in f-stops के पीछे f11 है, आगे 2.8 की लाइट चाहिए, डिफरेंस 4 स्टॉप का आ गया। यहाँ भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। So we always talk in terms of f-stop. चले शूटिंग चले। Next time onwards we'll also discuss जो FAQs हो, questions हो, we'll start discussing, we'll continue discussing. So we all want, we all should now become specific. So we all are so enthusiastic, every weekend, time and again, better we increase the quality. Not only of the photographs. Suppose you have to go to 3.2, then what do you say? What language do you use? Again, see 2.8 is the full stop. 3.2 पे करना क्या होगा? Close the aperture. This is like say we talk only in terms of closing the aperture or increasing the f number. From 2.8 to 3.2 you close the aperture. Closing the aperture. So what do you say? You say you close the aperture to 3.2, or you say you increase the f number to 3.2. ठीक है, समझ में आ गया। अब वो कितना है, 1/3 है, 1/2 है, 1, सिर्फ आई ओनली रिमेंबर एक पूरा 1 स्टॉप। तो रट गया ना वाला 2.8 या तो मल्टीप्लाई, अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लाई पता होना चाहिए, बट रटने के लिए 1, 2 उसके बाद वैसे ही याद हो गया। पर एक चीज जब करने पे आओगे ना, करो, जब बोले कि अभी स्लाइड F11 होगी तो कितनी लाइट और डालनी है, तब एक बार साफ भी ऐसे नहीं करते हैं, घर पे ही करते हैं। करो मतलब बोले कि F8 है, 3 स्टॉप की लाइट अगर मालूम मैंने और करनी तो कितना हो गया,
ऐसे करो 8, 11, 16 8 के बाद 11, फिर जब 16, फिर आप और आगे बढ़ो। हाँ, हर कोई करता है, हर कोई करना पड़ेगा, ये हर कोई करता है। तो जब जैसे हम लोग लेंस खरीदते हैं, कभी हम लोग एक टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, लोग कहते हैं ये वाइट बैलेंस आपका ना, वाइट बैलेंस में आओगे ना, ये इसके अंदर कलर शिफ्ट होता है, तो ये आपका नीला और So, here I'm signing out on the behalf of DPG. See you guys. Bye-bye.